Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome back. We are the live session organizer podcast Grow Together. I'm your host Mudassir. Today we have a very special guest, Ms. Sheza Qamar, and she is a voice for those children who haven't found their yet. She is a dyslexia advocate, a play therapist, parent, counselor, and a founder of Advocates platform and podcast. Assalamu alaikum, Ms. Sheza, and how are you? Walaikum salam. Thank you, Mudassir, for having me. I'm very excited. And Thank you. thank you. It's a pleasure to be here. Thank you so much, Ms. Sheza, for your time and the work you are doing. It's such an amazing. जिस टॉपिक को आप हाईलाइट कर रही हैं, कंटेंट क्रिएट कर रही हैं और लोगों को हेल्प आउट कर रही हैं, स्पेशली पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को, और उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं. द वर्ड व्हिच यू यूज इज a voice for those children who haven't found theirs yet. Such an interesting and a very powerful line. Before we discuss that, I want to know about yourself, from where your journey begins. Well, I'm not, ये actually ये एक ऐसा सवाल है, ये सबसे मुश्किल सवाल है मेरे लिए, because I haven't really thought about where my journey has started. So I'm going to be very brief about it. My journey actually started 17 years ago when I started working as a Montessori teacher in a school. वहाँ से मेरी in Pakistan or in Saudi? In Pakistan. I was in Pakistan then. At that time. At that time, I was in Pakistan. So it started 17 years ago, and I was working as a Montessori teacher, and I was a new mother also. My son was born. He was only a few months old. I started working. Somebody told me there is a space and you might, postnatal depression मुझे बहुत ज़्यादा था. So somebody said that why don't you join? It's Montessori और थोड़ा सा तुम्हारा दिल भी वो हो जाएगा. So I started working, and then from there it led on to understanding children, what their lives are. And I don't know if a lot of parents do understand, but बच्चे जो हैं वो उनकी बहुत सारी ना वो सिर्फ अकेले नहीं आते स्कूल, वो घर लेके आते हैं अपना पूरा. Exactly. जो उनके साथ हुआ होता है वो सारी फीलिंग्स वो जो उनके साथ हुआ होता है. I was always more interested in how that child is feeling and what that child is going through. More interested in that than how he or she is academically. So when I started that journey, फिर that led to special needs also. मेरे लिए उनके साथ काम करना बहुत एक न्यू वो था, and it was so exciting to see कि कितने मुख्तलिफ दिमाग हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अल्लाह ने बनाए हैं. एक स्टैंडर्डाइज दिमाग नहीं होता. तो मेरे लिए ये कुछ नए एक्सपीरियंसेस थे. And I think that led to a lot of things that I did, and special needs became my passion, and child mental health became my passion. And when you are dealing with children and parents, तो parenting तो आपका हो ही जाता है. This is something that you do. And when you are a parent yourself, you are learning with every passing year. So 17, 18 years into the system, I went digital 2 years ago. When pandemic started. हमने जब pandemic start हुआ तो यहाँ पे सऊदीया में पाकिस्तान community में a lot of people know me because I was working here also, and जो special needs के बच्चे थे वो सारे के सारे घर बैठ गए. And basically I think schools बहुत कम है इनके पास. schools तो हमारे पास options तो यहाँ पे है ही नहीं. वो तो उसके ऊपर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है और उसके ऊपर तो पूरा एक अलग ही podcast इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे एक टीचर हैं तो उनकी जो बेटा या बेटी आई गेस सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो वो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि स्कूल कराची में कोई नज़र नहीं आता जहाँ पे बच्चा जाके पढ़ सके. फिर कोई बोर्ड नज़र नहीं आता, चाहे वो जितने भी हमारे पास एजुकेशन काम कर रहे हैं, कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जहाँ पे उन किस्म के बच्चों को भी रिटेन किया जा सके कि दूसरी स्किल्स को चेक करके कि उनको डिग्री दी जा सके. तो ये एक बड़ी एक प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स साइड से फेस हो रही होती है. No, parents के साथ साथ I think a lot of children have been home here who are special, and they haven't been able to go to school because expats के लिए तो है ही नहीं हमारे पास ना, बहुत ही कम options हैं. उनकी mentoring, उनकी well-being, उनके साथ communication became so important. But वो आप communication आप phone के through इतने सारे लोगों से कैसे बात करें? तो somebody advised that I should open a platform and we should just go, digital, and let's just, put the word out there. When I started, तो उसका response इतना overwhelming था कि हम stop ही नहीं कर सके. You have done 46 episodes. 20 lives, and I don't know how many episodes, and up till now I think over 90 episodes हो चुके हैं, including the seasons I did.
इंक्लूडिंग द सीजन्स आई डिड। वो हम एवरी वीक कर रहे थे। उसी दौरान मेरे पास व्हेन आई स्टार्टेड मेरे पास माइक भी नहीं था बिकॉज लॉकडाउन था, हाँ, सारे माइक सामान बिक कहाँ से गए। खरीदोगे? बिल्कुल। कहाँ से हाँ, खरीदेंगे? उस टाइम पे बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई थी कि रिंग लाइट या फिर माइक्स, इस तरह की चीज़ें, हैंड फ्री हेडफ़ोन ये नहीं मिल रहे थे, सही कह द रही हैं। एपिसोड्स वर रनिंग एंड आई डिडंट नो हाउ टू स्टॉप। टॉपिक पे टॉपिक लोग मांगे जा रहे थे, लोग एडवाइसेस दिए जा रहे थे और लोग सुने जा रहे थे, क्योंकि मेरी ऑडियंस मोस्टली मिडल ईस्ट के पाकिस्तानी और इंडियन बन गए थे। ओके। तो देन दे वर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग और हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखा। अच्छा, द ओनली थिंग आई न्यू अबाउट पॉडकास्टिंग वाज टू टॉक। I did यस। not know anything else. I'm not techno savvy. There's nothing to be proud of. But I did not know anything. It was a struggle for me to learn यस। everything from the scratch. कि आप ये भी करें, ये भी करें, how to talk, माइक कौन सा चाहिए, कनेक्ट कैसे करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, एडिटिंग भी करवानी होती है, जी, जी, वॉइस जी। को भी कंट्रोल करना होता है। सो इट वाज, बट नाउ आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इनफ वर्क कि अब रिकग्निशन, अब लोग समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स तो हम बोल रहे थे, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहे थे जो जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अदर थे, पीपल थॉट जिससे कि बस हम कनेक्ट कर बोल सकें। रहे हैं। They wouldn't connect with us, they wouldn't listen to us, and there were times where I felt that I'm probably talking to a wall. लेकिन gradually लोगों ने जो है वो इसको समझना शुरू किया, and I'm glad that today there is a name in Middle East. That's what Yes, I can yes. say. Not in Yeah. Middle East, even in the Pakistan as well, because the problem which you are discussing is there's a common and general problem. Why audio podcast and how much is difficult to record audio podcast? क्योंकि उस even वीडियो जब फिर घर वालों को थोड़ा एहसास होता है कि चलो घर में कुछ You know, when you काम चल रहा है। started, when you started this video, I was very conscious कि ये मेरा scarf पे सही तो नहीं लग रहा। I am not used to video anymore. Audio podcasting is, to me, I mean, as an individual, is far more easier and it's far more fun to do, क्योंकि वो इतना intimate relationship होता है with your guest कि आप उसकी स्टोरी सुन रहे होते हैं। और बहुत सारी Yes. बातें जो गेस्ट जो है ना, वो जो इफ यू लिसन टू माय पॉडकास्ट, वो अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें, अपने बहुत बड़े बड़े जख्म भी हमारे उसमें शेयर कर देते हैं, एक बैरियर नहीं होता, एक शाइनेस खत्म हो जाती है। देयर इज नो बैरियर। कि कोई यू आपको हैव टू फेस हैव दैट। एक्सप्रेशंस आपके वो हो जाते हैं थोड़े बिल्कुल, से कि वो कोई एग्जैक्टली जज नहीं कर रहा उसके ऊपर कोई एग्जैक्टली। आपको। फेशियल एक्सप्रेशन आपको कोई नहीं देख रहा, आप जो मर्जी पहन के बैठ के, पजामा बिल्कुल, पहन के बिल्कुल बैठ के, आपने चश्मा लगाया हुआ है, कॉफी हाथ में, और आप बातें कर रहे हैं। ऐसे So ही। it becomes the kind of stories that I get. I sometimes feel that I wouldn't be getting them अगर मेरा audio podcast नहीं होता. So I think it's very interesting, and I personally enjoy listening to conversations. Those are audio because then I can do a lot of other things also while doing. Yes. अभी हमारा, like I told you a little earlier, के multitasking का time है ना। अभी लोग टीवी भी देख रहे होते हैं तो हाथ में फोन भी देख रहे होते हैं, तो कुछ भी कर रहे होते हैं, कि this is वो मोबाइल लैपटॉप, मोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल टीवी, मतलब मोबाइल का बड़ा कॉम्बो बना हुआ है सब चीज़ों का। मोबाइल खाना भी इवन बताना पड़ता है खाने के टाइम मोबाइल साइड पे रख दो, exactly. You have बट to ये stop हर जगह listening. फिट हो गया है। That's true. That's true. So I think I find audio podcasting more interesting and very एक मुझे ऐसा लगता है कि एक आवाज के साथ ना आपका एक रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल। और वो आवाज जो होती है ना, वो फॉर एग्जाम्पल द काइंड ऑफ पॉडकास्ट दैट आई डू, लोग फिर उसको सुन के ना कहते हैं कि ओ माय गॉड, शी इज टेलिंग माय स्टोरी, Yes. शी इज शेयरिंग माय जर्नी, Yes. आई फील एग्जैक्टली द सेम वे शी इज फीलिंग। The purpose of this was, purpose तो बहुत सारे थे. One of the purpose was to tell the person who's listening to my podcast is that you are not alone if you are feeling alone. You are not Yes. alone if you are depressed. अगर आपको anxiety है तो anxiety सबको होती है. ये बड़ी normal चीज़ है, बड़ी Natural है। natural चीज़ है. It's very natural. You just need to be a little acceptable towards that. अच्छा शिजा, एक प्रॉब्लम और भी रही इसके अंदर कि लोगों को लगता था ये सिर्फ एक वर्ड्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब एक फैशन और ट्रेंड बन गया कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। किस हद तक मुश्किल हुआ सोसाइटी में इसकी एक्सेप्ट क्रिएट करना कि ये वाकई में एग्जिस्ट करती है और लोग एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे? I think honestly, मुदस्सिर, a lot of people are working towards this. बहुत सारे लोग जो है वो उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ। मैं तो चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अब बहुत लोग बोल रहे हैं। और पैंडेमिक के बाद तो, पैंडेमिक सिर्फ कोविड पैंडेमिक नहीं था, वो मेंटल हेल्थ का पैंडेमिक भी था। Exactly. लोग घरों के अंदर बंद थे,
everybody was getting flashbacks, relationships were being affected, husband and wife Absolutely. में आपस में वो, because everybody was getting affected, और mental इसके बाद मेरा ख्याल है slightly more acceptance than it was before, but stigma will still be there. And Yes. I'll be honest with you, when you are an activist over something, you should not wait for the results. You should just keep on doing your work. अब जिसको फायदा हो सकता है, जो इस चीज को समझ सकता है, वो इस चीज का फायदा उठा लेगा. People who are very rigid will eventually understand when they want to understand. You Exactly. can't really push them. उनका अच्छा, पुश नहीं कर सकते. अगर हम पहले पेरेंट्स के रोल को डिस्कस कर लेंगे. पेरेंट्स की जो साइकी है, स्पेशली नए पेरेंट्स बन रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कुछ पुराने तजुर्बे, पुराने एक्सपीरियंसेस सुने होते हैं, उसके बिहाफ पे पेरेंटिंग कर रहे होते हैं. एज अ पेरेंट, व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जो चीज़ उनको पहले से सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बजाय कि उस पर कि वो बच्चे को एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें कि एक हाथ में खिलौना आई है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं और बच्चा फिर डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा है. तो किस हद तक हम पेरेंट्स को, इवन अनफॉर्चुनेटली मैं देखा पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हमारे पास अच्छे खाते इतने नहीं हैं. ERDC एक प्लेटफॉर्म है कराची में जो कुछ पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहा है, बट जनरली हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है. इवन मैं अक्सर जगह एग्जाम्पल भी कोट करी थी कि आपने कहीं जॉब करनी है तो पहले आपको इंटर्नशिप कराई जाती है कि किस तरीके से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है. बट इस डोमेन को लेके हमें काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं. आप इसको कैसे देखती हैं? Then again, this is a very long, topic itself. Actually, देखें, सबसे पहले तो I'd like to tell the parents that firstly you are a human being. Yes. अभी अगर if I have given birth to my child, तो पैदा सिर्फ वो नहीं हुआ है. I was also born as a mother. Yes. That's my first day of being a mother. There is no such internship. There is no such course. There is no such class that will prepare you to become a parent, whether you are a father or you're a mother. It doesn't. Yes. Yeah. So then every single day you are learning new things. Yes, when you have your first one, तो फिर आपको trial and errors तो मुदस्सिर everybody has to do it. You can't get away from it. I have, as a parent, also made so many mistakes, but I've learned from those mistakes. क्योंकि मैं अपने आप को यही समझाती थी, ये एक जर्नी है. Yes. There are times when you feel guilty also कि ये गलती हो गई, वो गलती होगी, but then how will you learn? आप जब तक कोई गलती नहीं करेंगे, आप सीखेंगे कैसे? There is nothing you can learn, right? Absolutely. So even when you अब for example, if my son is 1 year old, तो वो उसके बाद की जर्नी 1 साल जो है वो मेरे लिए भी नया है, उसके लिए भी नया है, उसके माइलस्टोन्स भी नए हैं, मेरे भी, mine will be new also. Second, third, fourth onwards. My eldest is 17, so until the age of 17, every year is a challenge for me as a parent. हाँ, what you can do, मिस्टेक्स तो आप नहीं कम कर सकते, अपने आप को हील करना बड़ा जरूरी है. You have to parent yourself first. The problem with parents these days is, मैं जब भी किसी पेरेंट से बात करती हूँ तो वो दे स्टार्ट देयर कॉन्वर्सेशन लाइक कि जी वो बच्चा ऐसे करता है, जिद्दी हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, और उसकी तो आदत ही ऐसी हो गई. दिस इज व्हाट फिर जब पहला सवाल पूछती हूँ कि हाउ आर थिंग्स बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड and how are things at home. जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है? यस, तो जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, और फिर बच्चे अपने बिहेवियर, अपना इमोशंस अपनी एज के हिसाब से जिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो उस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. एंड देयर हैव बीन टाइम्स वेयर चिल्ड्रन विल नॉट show appropriate behaviors, but you have to understand why this is happening. I have to be a mentally stable mother to raise mentally stable children. Yes. That is my job. Yes. That is my job. I have to heal my traumas ताकि मेरे बच्चे को वो चीज ट्रांसफर ना हो उसके अंदर. Exactly. My husband has to make sure that he has to heal his traumas. I cannot heal him for his children or for himself. He has to realize, he has to heal himself. Only then आपके बच्चे mentally stable और emotionally stable होंगे. ये बात तो तय है. There is no exactly. Yeah. इसका एक environment ही सही नहीं है, बच्चा जिसमें रह रहा है माहौल में वो सही नहीं है. और you know how they say that it takes a whole village to raise children, a child, one child. एक बच्चे को पालने के लिए पूरा village चाहिए. It's true. Your own family, आपकी extended family, which includes your grandparents, your aunts and uncles, paternal, maternal, दोनों. Both sides. Everyone has to be
समवेयर ऑन द सेम पेज कि हमको बच्चों की बेहतरी चाहिए, हमने अपने इमोशंस जो है ना वो साइड पे करने। अम्मी ने ड्रामे देखने ख़वातीन तो अम्मी ने मुझे बताया कि जो टर्की के ड्रामे आ रहे हैं उसके अंदर जब भी कोई ऐसी बात होती है पेरेंट्स के दरमियान तो वो बच्चों को ऊपर भेज देते हैं पहले, उस जगह से हटाते हैं और फिर वो बात करते हैं। जबकि उसका एक बड़ा अच्छा उन्हें मैसेज ड्रामे से कन्वे कर रहे थे वो अपने कि जो इस तरह अगर कोई बहस मुबाहिसा है, कोई डिस्कशंस है जिसको लगता है कि थोड़ा सा हार्श हो सकती है, तो वो अपने बच्चों के सामने नहीं करते और वो उसको उनके रूम्स में भेजते हैं, फिर उस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर यहाँ पे इतना ज़्यादा हमें है ही नहीं, है ही नहीं। वो आप कह रहे हैं कि जी इतना ज़्यादा नहीं, है ही नहीं। भाई हमारे अपने इमोशंस देखो मुदस्सिर, अभी कौन सा वो चल रही है, हम 90s के बच्चे हैं, ठीक है ना, हम 90s के बच्चे हैं, ये बड़ी सप्रेस्ड जनरेशन है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो 1947 के बाद यहाँ आए, उनके अपने माइग्रेटिंग ट्रॉमास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। समबडी वाज टेलिंग मी द अदर डे कि आजकल बच्चों के कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। व्हेन वी वर यंग हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता था, नहीं, हम सप्रेस थे। एज अ जनरेशन एवरीबडी वाज सप्रेस्ड। आपको बोलने की इजाजत नहीं थी, आपको घरों में सवाल करने की इजाजत नहीं। Exactly. So that kind of upbringing, that and I know so many parents जिनके fathers emotionally detached रहते थे, है ना, घर में सिर्फ काम करते थे, पैसे लाते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। बड़ा गोल डिफाइंड हुआ था कि वो कमाना काम है, इनका काम बच्चों को पालना है। And then there were homes जहाँ पे अब्बा के घर में आते ही सब सीधे बैठ जाया करते थे, शरारतें खत्म हो जाती थी, प्रिंसिपल क्लास आ गई। हाँ, तो हम तो ऐसे करते थे, and everybody is like very proud of this fact. ऐसा नहीं होना चाहिए. This is not a normal family. And when you are raised in that environment, Mudassir, so when you grow up and you have a family to look after, तो आपके इमोशंस पे अब तो मैं तो कमाता हूँ या मैं कमाती हूँ, या अब तो मैं माँ हूँ या अब मैं निकाल सकती हूँ. We feel power. So, so we are powered. We don't know how to control our emotions. This generation does not, and we all need to learn how to do that. Yes. I wouldn't say control. Use your emotions, but लोग कहते हैं ना IQ तेज है, IQ तेज होना चाहिए. EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सबसे ज्यादा तेज होनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है. और जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको लोगों पे गुस्सा भी नहीं आएगा. ये बात मैं आपको बताऊं. Then you will understand कि ये अगर ऐसे कर रहा है ऐसा तो क्यों है, उसके रीजन सब बताना शुरू हो जाते हैं. सही कह रही है, बिल्कुल. फिर आपका जो रिएक्शन है वो suddenly comes to me and he starts shouting at me कि मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि हमारे पास सऊदीया में तो एजुकेशन के बहुत इश्यूज है ना, स्पेशल नीड्स के बच्चों के. एंड इफ अ फादर इज कमिंग टू मी एंड ही स्क्रीम्स एट मी, आपको पता नहीं है मेरे बच्चे के साथ 2 साल से हम ऐसे गुजर रहे हैं, कोई ऐसे गुजर. And I'm like, yes, I know, I understand what you're going through. And this lady is sitting next to me, she's like, he's shouting at you. And why are you not responding? I said, he's not shouting at me. He's shouting because he's angry, because his child is suffering. Yes. So these are the things that we need to understand. Yes. And with time, I hope लोगों को समझ में आए. मैं यही कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ अपने पॉडकास्ट में कि how to live a life which is real. You know, हम बबल में हम अपने बबल से निकल आए. It's time that we all need to come out of our bubbles. One more thing जो मैंने आपके पॉडकास्ट में सुनी थी कि there are certain topics जहाँ पे पेरेंट्स एजुकेट नहीं कर रहे होते अपने बच्चों को लेके, और इधर जनरल फिलोसफर फिनोमेना डैड के गूगल कर लेंगे, टाइम के साथ सीख जाएंगे. हाउ मच इज इम्पोर्टेंट डैड के पेरेंट बच्चे के साथ डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें और उनको एजुकेशन घर से मिले इंस्टेड ऑफ डैड के वो बाहर से डिफरेंट बातों को सुन के फिर वो अपने जहन में उन चीज़ों को बनाएं. So what really happens is कि when I was a teenager, तो हमारे घर में बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी चीज़ों की बात होती थी. एक्चुअली आई वाज इन सऊदी ऑल्सो. तो हमारा जो है ना एक न्यूक्लियर फैमिली थी, तो कम्युनिकेशन में पेरेंट्स के अलावा और ज़्यादा कुछ था नहीं. एंड माई मदर एंड माई फादर वर वेरी used to discuss a lot of things. But when I used to see a lot of people around me, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें घर वाले उनसे बात नहीं करते थे.
Yes, yes. And how do you find out a lot of things when you are a teenager, let's say about puberty, etc., etc.? You find that out through your friends. Yes. अब अगर मैं 13 साल की हूँ तो मुझे अगर 13 साल की लड़की एजुकेट कर रही है तो शी विल नॉट गाइड मी द वे माई मदर डज और माई फादर Yes. डज और माई पेरेंट डज, you know. Absolutely. And even now, unfortunately, a lot of people do come up to you and say, "Okay, yeah." I remember I was then again I have a story. I was asking a father, a mother, "Okay, did you see your son is growing up? He's turning 13. Have you spoken to him about puberty and everything?" She said, "मैं क्या बात करूँगी? मेरे husband बात करेंगे." I told her Asian fathers तो बात normally नहीं करते. So if an Asian father is not going to talk, तो तुम भी करना पड़ेगा. And she goes like, यार खुद ही इंटरनेट पे पता चल जाएगा. I heard the story you mentioned you on podcast that कि Yeah. Google कर लेगा, Google से पढ़ लेगा. Google कर लेंगे. And this is not just one mother. I have heard so many The number of cases, yes. The number of cases. They will tell you कि जी वो Google से पता चल जाएगा, हमें कौन सा हमारे पेरेंट्स ने बताया. तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बताया था, so do you remember exactly how you felt when you were 13, 14? Your emotions were everywhere. You were a mess if your parents did not guide you. We start shaming teenagers when they turn 13, 14, 15. ये बहुत common है पूरे subcontinent में, चाहे वो इंडिया अच्छा, हो. शिजा इसमें एक और प्रॉब्लम है. देखिए, एक डिस्कशन मुझे याद है कि स्कूल्स के अंदर एक प्रोग्राम होता है कि किस हद तक स्कूल्स में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, या वहाँ पे किस हद तक क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवा के एजुकेट किया जा सकता है डिफरेंट टॉपिक्स को लेके. तो क्या आप समझते हैं कि और ऑल्दो पेरेंट्स भी इतना कंफर्टेबल नहीं होते कि स्कूल के अंदर चीज़ को पढ़ाया जाए या सिखाया जाए किसी क्लास के थ्रू, किसी वर्कशॉप के थ्रू, आप किस हद तक समझते हैं कि स्कूल्स इसमें अपना एक अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं? मुदस्सिर, स्कूल्स में तो बहुत कुछ कराना चाहिए जो होता ही नहीं है. आई थिंक नाउ ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग एंड स्कूल्स बहुत सारी चीज़ों के लिए एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन देन अगेन दे आर सिलेक्टिव स्कूल्स. Yes. ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है कि हर स्कूल में सर्टेन एज ग्रुप के बच्चों के साथ हम जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स या Problems हम बात करेंगे. बात कर सकें. ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, ठीक है. एंड व्हेन सो दैट्स दैट. उस सिस्टम को अगर आप एज अ पेरेंट नहीं चेंज कर सकते, सो व्हाट विल यू डू? विल यू वेट? हाउ लॉन्ग विल यू वेट? आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, दे विल ग्रो अप. सो बेटर एजुकेट योरसेल्फ and then educate your children. और ये parenting के लिए ना ये बिल्कुल best era है, because you have learned from your experience. और अब वो generation जो अभी parents हैं, they are more aware because they do understand कि हमारे parents ने क्या mistake की. और अब हम वो mistake, you cannot raise your children how you were raised before. Exactly. So when you understand that, then you need to make an effort. And there are so many ideas and tips on Google for a parent on how to educate your child. So do that. Don't wait for the school. अच्छा, इंस्टेड ऑफ कि बच्चा गूगल करे, पेरेंट गूगल करके अपने आप को अवेयर करके एजुकेट कर दे बच्चे को. Why not? Why not? I think this is the best way because you will guide your child better. मैं अगर अपने बच्चों को गाइड करूंगी, मैं बेहतर तरीके से गाइड करूंगी. What is difficult for me is to start the conversation. बस. That's it. I can just read about it, that how do I start the conversation? Should I start abruptly? Should I make the child sit next to me and then I start talking about it? Or should I take the child for a lunch or a dinner? I mean, whatever जैसे आपको सहूलत हो. ये तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे ना कि आपने अपने बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करना है कि what's going on with him and how is he supposed to take care of himself or herself. ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव दैट कम्युनिकेशन तो बाहर वाले एजुकेट कर ही रहे होते हैं और फिर देन योर टीनेजर इज लिटरली अ मेस, क्योंकि घर पे कोई बात ही नहीं कर रहा. एंड जितने कुछ और चल रहा होता है, बच्चे का माइंड में कुछ और चल रहा होता है और फिर वो प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली खुद सफर कर रहा होता है बच्चा. That's true. And when I'm speaking to a parent, तो मुझे 90% पेरेंट्स की बातों से ऐसा अंदाजा होता है कि when they were teenagers in the 90s, तो उनकी ना घर की पर्सनालिटीज डिफरेंट थी और बाहर की पर्सनालिटीज डिफरेंट थी. This is very alarming. And it's not just one parent. I have met so many parents. Yes.
जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो उन्होंने अपनी जो बताते हैं, जो जो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आई एम अमेज्ड टू हियर दैट हाउ दे वर लीडिंग टू लाइव्स एट सच अ क्रूशियल एज, बिकॉज घर पे कोई बात ही नहीं करता था. So, and then there are parents who ask me कि when is the right time to speak to my child, you know. Yeah. And if your child is ready to ask a question, he or she is ready to hear the answer. जब टीनेजर्स रास्ते ढूंढ रहा होता है ना, जब टीनेजर्स के जहन में सवाल होते हैं ना, तो आपको जवाब फिल्टर नहीं करने चाहिए. आप अपने तरीके से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं. You just need to, you as a parent need to be aware and educated. डिफरेंट स्टोरीज आपने कवर करी पॉडकास्ट के थ्रू, विच वन इज वेरी क्लोज कि यार ये चेंज आया, इसमें बड़ा बहुत प्रॉब्लम थी जो कि चेंज हुई, सुन के बड़ा खुशी हुई हो? I think the ones that I do for parents जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स होते हैं, क्योंकि उन्हें सुनने की बहुत ज़रूरत होती है, वो बहुत अकेले होते हैं, they are very isolated. अच्छा, उसमें होता भी, सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी आउटडोर पे जा रहे हैं, लोग नहीं बुलाते, हाँ, यही मैं लोग नहीं बुलाते, they don't invite you, they're not going to invite you. यस, वो एक जिंदगी भर एक ट्रॉमा से पेरेंट वो गुजर रहा होता है कि यार व्हाई मी, या वो व्हाटएवर द सिनेरियो वाज दैट, बट वो हमेशा अपने आप क्वेश्चनिंग करता रहेगा. My biggest achievement of any podcast is when a parent listens to my podcast and they tell me कि हमने 5 मिनट 7 मिनट हम बहुत रोए और उसके बाद we felt relaxed, we were better. So I realized that an audio podcast can be therapeutic. Yeah. This is one experience that I had कि एक ऑडियो पॉडकास्ट जो है वो थेरेप्यूटिक हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके अल्फाज में इतना असर होना चाहिए कि सामने वाले की दिल को लगे वो बात. Exactly. कि वो खैर जाके पॉडकास्ट की वॉइस टोन है वही बहुत अच्छी है, जिसमें लिहाज से मैंने मतलब अगर आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो इट रियली हेल्प्स यू आउट कि किस तरीके से आपने उस फेस में से निकलना है या उसको डील करना है. I hope so. नहीं सीरियसली. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट व्हिच आई वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये जो हमने पेरेंटिंग साइड डिस्कस किया कि पेरेंट्स किस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं या किस हद तक वो पेरेंटिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस हद तक ज़रूरी है एज अ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड मेंटल हेल्थ. मतलब बच्चा हमें कहीं भी नज़र आता है तो हमारी उसको देख के हम ओपिनियन जज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, और इंस्टेड ऑफ डैट कि हम उसको हेल्प आउट करें, हम उसको और रिजिड कर रहे होते हैं. आज तक मुझे समझ में नहीं आया बच्चे तो क्यों पूछते हैं कि रोजा रखा है, कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा है. मतलब ये एंड द वर्स्ट वन इज कि अच्छा तुम्हारे किसी के घर में अगर न्यूबॉर्न बेबी है, मैं तुम्हारे भाई को ले जाऊं, क्यों लेके जाओगे भाई? मतलब इस किस्म का टॉर्चर जो आप बच्चों को दे रहे हो, तो अच्छा ये हमें तफरी लग रहा होता है, हमारा मजाक लग रहा होता है, हमें अपना फन लग रहा होता है, और बट उस बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है. तो क्या मतलब अगेन सोसाइटी को कैसे एजुकेट किया जा सकता है कि आप एक बच्चे को डिस्टर्ब कर? सोसाइटी को एजुकेट करना बहुत मुश्किल है. हाँ, एग्जैक्टली. आई एम नॉट सेइंग जहां बच्चे के अंदर रोजा का रखा है और अब तक तो सवाल है कि रोजा का रखा है. It's very difficult to make that person who's doing this understand that you have to unlearn these habits and then learn a new way of communicating with a child. Like you said कि वो बच्चे को कहते हैं कि अच्छा रोजा रखा है, कहाँ रखा है, ऐसी बातें, you know, वो बच्चे को अगर इरिटेट करी तो वो आगे से क्या करेगा? He is going to misbehave. Yes. You can't expect a very genuinely sweet answer from let's say a 5-year-old or a 7-year-old if you are asking questions that sounds very silly to the child. अच्छा, अगेन ये कहाँ से स्टार्ट हुई क्वेश्चन, ये सोचता हूँ कौन सा दिमाग and it's very common in Pakistan society. ये बड़ा common है ना हमारी society में. So you know, I think you need to, as parents, you need to understand this first. Yes. And then when you are there to guide the child, जब आप I think previous generation में ये issues बहुत होते थे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बड़ा है, उनको जो है वो मतलब वो बड़े तो सही कहते हैं, you know. This generation will not agree with you. And it's not even true. जो भी बड़ा है, जो भी adult है, वो इंसान भी है.
वो गलतियां भी कर Yes. सकता है, और Yes. वो गलत बात भी कह सकता है, वो तंग भी कर सकता है, वो तकलीफ भी पहुंचा सकता है. Yes. So when I don't know a single child जिसके पीछे उसके पेरेंट्स खड़े हो ना, when I'm talking about खड़े हो, that does not mean that allow them to misbehave, allow them to Yes. do Yes. Yes. anything they want. What I mean to say is when you give them that security, they are not affected by a lot of people around them. अच्छा, अगेन कुछ एक इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जब बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे रहे होते हैं तो कुछ पेरेंट्स इंटेंशनली बच्चों को बदतमीज़ बना रहे होते हैं और उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। देखा हमारे बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया, कितना कितना मतलब वो उस मिसबिहेविंग को उसकी कामयाबी समझ रहे होते हैं कि जो जितनी अच्छी बदतमीज़ी कर रहा है वो खुशी है उसको, मतलब कितना अच्छे तरीके से हमारे बच्चे ने किसी को इंसल्ट किया, मतलब दे आर हैपनिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। लिफ्ट में जा रहा है बच्चा, सारे बटन प्रेस कर रहा है तो उसको भी खुशी होती है मेरे बच्चे बटन खुश प्रेस करना होते आ हैं, गए। हाँ. तो इंस्टेड उसको सिखाएंगे बेटा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो हम मतलब That's हम bad हाँ, parenting. That's bad हम parenting. हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं एज अ पेरेंट कि यार ये तो मतलब हमारा बच्चा तो मतलब हमसे भी तो हाथ आगे जा रहा है, हाँ, मतलब चार हाथ समथिंग आगे लाइक दैट। शरारती हो. Exactly. No, no. You know, when you encourage this such behaviors at a very young age, so he's not always going to be 3 years old to press यस, all यस, the यस, buttons, यस। you know. जब आप ये चीजें encourage करेंगे तो विद टाइम वो आपके बटन भी प्रेस करने लगेगा. जो आपके नर्व एब्सोल्युटली, का हर एब्सोल्युटली, बटन एब्सोल्युटली। प्रेस करेगा. यस, आपकी नर्व का हर बटन प्रेस करेगा, एंड देन यू विल स्टैंड अप एंड से कि तुमको हमने ऐसे तो नहीं सिखाया. यस। बट द ट्रूथ इज कि आप शुरू से यही सिखा रहे थे. इट्स जस्ट दैट इट इज स्टार्टिंग विद यू नाउ, सो यू डोंट लाइक इट. अच्छा, प्रॉब्लम एक और भी है ना कि हमें लगता है जो हम वी नॉट बिलीव इन एक्शंस, जो हम एक्शंस के थ्रू सिखा रहे होते हैं वो हमें खुद ही रियलाइज होता है कि हमारे एक्शंस क्या, हमें लगता है जो हमने सिर्फ वर्ड्स के थ्रू अपने बच्चों को एजुकेट किया बच्चा वही सीख रहा है हमसे, जबकि बच्चा हमें देख के ज़्यादा सीख रहा होता है कि घर वाले कर क्या रहे हैं। और एक A प्रॉब्लम child जो will बहुत always the child will always learn what's happening at home, not what the parents tell them to do. यस, जो घर एक में प्रॉब्लम देखते और हैं. हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी मोबाइल फ़ोन को लेके होती है। अब हम्म, घर में जितने लोग हैं सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सब यूज़ कर रहे हैं। बच्चा yeah. बेचारे के पास मोबाइल नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकता, उसने कहीं भी घर वालों से ही माँग लिया मुझे मोबाइल दे दें। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मतलब किस तरीके से मोबाइल और बच्चे को अ, दूर या करीब या कैसे उसकी मतलब बैलेंसिंग क्या है कि बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए या कैसे एक टाइम सेट किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स मुझे पास यही आते हैं कि बच्चा पबजी खेलता है। हम्म. मैंने कहा चलिए हम भी खेलना शुरू कर देते हैं। मतलब हाँ, उसका कोई exactly. हाँ, मगर एक एक की बहुत छोटे बच्चों को लेके स्पेशली जो किड्स हैं हमारे पास, वो बेबी शार्क, डू और डिफरेंट है इस तरह की आज का भी कोई नया आया है आई गेस, तो उसमें बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। बट पेरेंट्स का विषय होता है कि हम किस तरीके से मोबाइल का जो इनका टाइम है, स्क्रीन टाइम वो कम किया जाए और वो ज़िद भी ना करें और वो रोने भी ना। So what really happens is कि आप मोबाइल और स्क्रीन से ना बच्चों को आप दूर तो कर नहीं सकते ना. But this is what it is right now, है ना. Yes. I've heard from parents, अभी नया नया बेबी बॉर्न हुआ है ना, हम तो 3 साल तक उसे स्क्रीन दिखाएंगे ही नहीं, वो तो It's not स्क्रीन तो possible. देखेगा ही नहीं. And the moment the mother is exhausted from not sleeping for Yes. days, वो कहती है बेटा ये लगा लो ताकि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर. Rest कर And I don't yes. blame such mothers. You are human. आपकी बॉडी को भी रेस्ट Yes. चाहिए होती है. Yes. 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 So what you can do is और and then there are set of parents जो कहते हैं हमने तो अपने घर में टीवी रखा ही नहीं ना. There are set of parents जो कहते हैं हमने अपने घर में टीवी रखा ही नहीं क्योंकि वो कोई अच्छी चीज नहीं. बट आपके पास गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं. Yes. Yes. वो Yes. मोबाइल्स अगर बच्चे घर में किसी कोने में जाके अगर अलग से देख रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है. That is अच्छा, more उसपे dangerous. कंट्रोल कोई नहीं है क्योंकि अगर आप उस पे यूट्यूब पे चले कंट्रोल तो जाएं है ही नहीं ना. उस तो पे तो कंट्रोल है ही मल्टीपल नहीं. वीडियोस आ रही होती हैं, देखिए कभी कोई हमारे मूवी कभी हमारे सॉन्ग। सऊदिया में तो फिर बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत कुछ रिस्ट्रिक्टेड है. बट जनरली तो ये एक But generally all over the world ऐसा कुछ भी नहीं है. So ट्रू। what you need to do is show them TV, allow them to play games, allow them to watch what they want, but make sure कि अगर 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 लाउंज में अगर टीवी रखा हुआ है तो जब जो चीज सब देख रहे हैं वही चीज वो देखें, और थोड़ा सा आप अपने भी उसको कंट्रोल कर लें. डोंट वॉच द काइंड ऑफ मूवीज दैट यू वांट टू एज अडल्ट्स के ये यस। बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. इसमें बहुत वायलेंस है या इसमें आप इसमें कुछ लैंग्वेज स्पोर्ट्स देख ऐसी लें है. या आप कोई कुछ भी देख लें. Change your priorities for a few years so your child gets वो उनके सिस्टम में ये हो कि ये चीज नॉर्मल है देखने की. या अब मसला टीवी में नहीं है।
बिल्कुल। अब बच्चे जो है वो जब बहुत यंग एज से बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं, ओल्डर एज में जाके कभी कुछ क्लिक हो गया, कुछ या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी आ जाता है। सो यस व्हेन वाचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स इज़ नॉर्मल एट होम। आई एम नॉट सेइंग बाय नॉर्मल मीन्स के बिल्कुल एक्सेसिव करते हैं। या ये तुम्हारा टीवी टाइम है, ये तुम्हारा स्टडी लंच टाइम टाइम है, है ये जिसे तुम्हारा ये टाइम टाइम है, टेबल ये डिसाइड तुम्हारा करना वो है। करे, हाँ। और उनको उनको अगर आपने 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दिया है, तो दैट 1 घंटे के स्क्रीन टाइम में जो वो टीवी देख रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि उसपे कोई क्रिटिसिज्म ना हो, कि ये या तो बहुत ही कोई सिली चीज़ है और ये तो बहुत ही कोई वो है। भई जो आपको सिली लग रहा है, वो फिर उसके इम्प्लीमेंट है। जनरेशन को सिली नहीं लग रहा है। इफ द यस चाइल्ड इज़ प्लेइंग फोर्टनाइट, तो वो फोर्टनाइट गेम जो है वो आपको नहीं समझ में आ रहा ना, बट यस उसकी जनरेशन के लिए तो उसकी इज्जत का मसला है कि हाउ कैन आई गो आउट ऑफ द हाउस एंड टेल एनीवन कि मुझे तो फोर्टनाइट आता ही नहीं खेलना। गिव हैव देम यू प्लेड दोस। मारियो बाय द वे? I have 3 boys at home, and while I'm recording a podcast here, they're all playing PlayStations. जबरदस्त। So, so, so I can't run away from this. यस लेकिन मैं बात। अगर अपने अपने लाउंज में अगर लगा दूं स्क्रीन कि आप हम्म इस पे खेलो गेम, सो आई नो व्हाट दे आर हम्म प्लेइंग। यस देयर आर इट्स अ गेम्स सर्टेन व्हिच आर कंट्रोल। अडल्ट गेम्स, यू शुड मेक श्योर के तुम्हें और जो खेलना है मैं मतलब लाके दे दूंगी या लाके दे दूंगा, लेकिन सर्टेन गेम्स दैट आर 18 प्लस जो या बहुत वायलेंट हैं, दैट डज नॉट मीन के फोर्टनाइट इट इज आल्सो 18 प्लस, बट बच्चे या खेल रहे हैं, यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट कि कर क्या रहे यस हैं। कंट्रोल You के have साथ to आप be उस चीज को literally अलाउ on करें। your toes when you are a यस parent. You can't, relax yourself yes at yes any yes point. yes. Thank you so much, Ms. Sheza, the way you explain all the points. I really enjoyed the show. और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस Thank तरह से you आपने for having पॉडकास्ट में me. एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हैं, एजुकेशन अवेयरनेस एक बड़ा एक वो टॉपिक है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रहा है। हमारे पास मॉर्निंग शोज हुआ करते थे पहले, बट उसके अंदर भी कभी इस टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया गया। फिर जो हमारे पास Yeah. डेली पॉडकास्ट है उसके अंदर भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं होती। फिर इस तरह से हमारे पास जनरली कोई ऐसे लोग भी नहीं है अवेलेबल सोसाइटी में जो कि इस टॉपिक के ऊपर आपको एजुकेट करें, आपको गाइड करें। और अगेन जो पेरेंट का जो मैं समझा आपकी बात से कि वो एक प्रॉब्लम में, एक तकलीफ से होते हैं जब अपने बच्चे को देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हम इसको हेल्प आउट कर सकें, क्योंकि उनका भी माइंडसेट ये होता है कि एक सर्टेन टाइम बाद हमने इस दुनिया से चले जाना है, इस बच्चे ने अपनी लाइफ को कैसे बिल्कुल, कंटिन्यू करना है, बिल्कुल, बिल्कुल, किस तरीके से वो डिपेंडेंट होगा, बाकी बिल्कुल। सिबलिंग्स के साथ किस तरीके से उसका रिलेशनशिप बिल्ड करना है। बहुत एक कुछ केसेस में नज़र आ रहे हैं जो हमारे अपार्टमेंट में है, दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। और एक बड़ा एक एक चाहे वो लड़का हो या लड़की, बड़ा एक मुश्किल पीरियड होता है उसके लिए बहुत भी मुश्किल होता और है। सोसाइटी के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। और अगेन हमारे पास जैसे कि एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड अ प्लेस जहाँ पे जाके हम अपने आप को एंटरटेन कर सकें, फ्रेश कर सकें। इन लोगों के लिए तो वो भी हमें जगह नज़र नहीं आती जहाँ पे जाके कोई ग्राउंड हो, कोई पार्क्स हो, कोई I अम्यूजमेंट think, पार्क हो। Mudassir, more than the lack of awareness, we lack empathy also. यस 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 डू एग्री। मैं I don't understand how people not care about anybody who is going through a lot of. I just don't understand that part. क्योंकि कितना टाइम लगता है किसी के घर में स्पेशल नीड्स बच्चा होते हैं? How long will it take? या You don't know what the future नो holds, वन right? नोस। यस 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 Nobody knows, right? And so if you cannot do anything, just offer small help. यस Can यस I do this for you? You cannot babysit the child. You can at least talk to the mother or the father. या So there are various things that you can do if you have empathy inside you. एब्सोल्युटली। या तो मतलब सोसाइटी को थोड़ा सा अपने अंदर एम्पैथी क्रिएट करनी है टुवर्ड्स दैम, ताकि एक एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट हो कि वो भी इंसान है, इस दुनिया में ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच अगेन। एनी Thank you for having लास्ट me. एडवाइस, द लास्ट वर्ड व्हिच यू वांट टू I think शेयर just एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग नोट? any advice that I would give to parents is parent yourself first. अपने आप को पेरेंट करें तो फिर आप अपने बच्चों को बेहतर पेरेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जो आपकी तकलीफें हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनको सॉर्ट करें, तो आपके बच्चों के अंदर कब होंगी? वो कहते हैं ना कि एंजाइटी बढ़ती है। इफ आई एम एन एंशियस यस पेरेंट, यस माय चिल्ड्रन विल बी एंशियस। इफ आई एम अ डिप्रेस्ड पेरेंट, दैट्स हाउ दे हैव सीन मी ग्रोइंग अप, तो वो भी डिप्रेस्ड पेरेंट्स बनेंगे एंड ब्रेक द साइकिल। I tell my 17-year-old that I try to do things that I did not agree with
विद पेरेंट्स जो मेरे टाइम के ऊपर पेरेंटिंग जिस तरीके से कर रहे थे, आई ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली. Yes. So this generation is better, and when you become a father, your generation should be better than ours. Yes. So मेरे Absolutely. कैपेसिटी में मेरे अपने बच्चे हैं या मेरे अपने जो Circle है, क्लाइंट्स हैं, environment. जो अपना सर्कल है, उस कैपेसिटी में मैं जिसको बता सकती हूँ वो बताऊँ, लेकिन बट ट्राई टू मेक अ बेटर जनरेशन सो द नेक्स्ट जनरेशन इज बेटर. ये एक बहुत जरूरी है. There is nothing more rewarding than giving this society a member जो कि Yes. mentally emotionally stable हो. इससे बड़ी achievement कोई नहीं हो सकती. That's what I think. Yes. क्योंकि आप ऑफिस में भी जाते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, your colleagues. बिल्कुल. If there's somebody who's emotionally unstable, you don't want to talk to that person. Yes. Right? हमने इसके साथ बात ही नहीं करनी, इसको देखना ही नहीं है, इससे तो दूर भागो. You know? So you don't want to do that. Keep your mental health checked in. Bas, that's I think one big advice. Again, thank you so much for your time. Thank you, आपने टाइम शेयर किया, नॉलेज शेयर करी सारी, बहुत मज़ा है सारी बातें सुन के. और असल ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए ताकि एक बेटर सोसाइटी क्रिएट हो सके, क्योंकि उस सोसाइटी का हम सब पार्ट हैं. हम ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अगर मैं अच्छा बन रहा हूँ और अगर बाकी सोसाइटी सही नहीं तो मैं ग्रो कर पाऊंगा. मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जब तक कि पूरा एक ओवरऑल माशरा ही सपोर्टिव ना हो. तो उसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं ला सकते, किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते कि हम इन लोगों को निकाल दें सोसाइटी से या ख़त्म कर दें. मतलब एक वॉट एवर द बैकग्राउंड है उस प्रॉब्लम का. बट अगेन वी नीड टू एक्सेप्ट देम. और द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कट द चेन, एम्पैथी क्रिएट करें. It's important to understand that being different is not bad. Yeah. अगर 1 मिनट है तो बस मैं एक बात Yeah, why not? Just I had a father who called me, and his child was recently diagnosed with autism, and he was 3 years old, and he was crying. Will my child ever be normal again? Will my child ever be cured? मैंने कहा पहली बात तो ये कि उस बच्चे को कोई डिजीज नहीं है. उसको अल्लाह ताला ने हम सब चैलेंजेस के साथ पैदा हुए हैं. Yes. उन बच्चों की चैलेंजेस ज्यादा हैं, और अल्लाह ताला ने जिस चैलेंजेस के साथ उसको पैदा किया है, ही इज गिविंग यू अ रिस्पांसिबिलिटी. एंड रही बात नॉर्मल की, व्हाट इज नॉर्मल? Yeah. कैन यू एक्सप्लेन टू मी? आज तक कोई भी मुदस्सिर इसको कोई प्रॉपरली इसको आंसर कर सका है कि नॉर्मल क्या होता है? जो अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है वो मेरे लिए नॉर्मल है, आपके लिए नॉर्मल नहीं होगी. जो आपकी जिंदगी है वो आपके लिए नॉर्मल है, जो मुझसे डिफरेंट होगी और वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं होगी. So everyone is different, and you have to understand that ये मुख्तलिफ दिमाग अल्लाह ताला ने बनाए हैं और इस दुनिया में भेजे हैं. And who are you to not accept them? Yes. Who are you? Exactly. You know? So I guess हम भी उस जगह पे हो सकते थे जिस जगह पे कोई और है, कोई जैसा ना कुछ किसी के भी हैंड में, हाथ में चीज नहीं है कि आप कि कोई क्लास सिस्टम है, कोई सुपीरियर सिस्टम है जिसके अंदर आप एंजॉय कर रहे हो. आई होप एवरीवन, थैंक यू सो मच. आई विल शेयर दिस पॉडकास्ट ऑन द एंकर एज वेल ताकि आप इसको ऑडियो में भी एंजॉय कर सकें. Thank you so much. Realize the more importance of the audio podcast as well by listening to you. And again, thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz. Hope you like this show. अपना ख्याल रखिएगा. The next show will be on the Tuesday to discuss another topic. Have a nice day. Allah Hafiz. Again, in the last, thank you so much Sheza कि आपने Thank you Mudassir. Thank you so much. Thank you. और टाइमिंग का गैप भी था, तो फिर भी आपने उसको मैनेज किया एंड बड़ी शॉर्ट नोटिस में मैंने अरेंज किया था. नहीं, it's okay. Thank you so much. Allah Hafiz everyone. Have a nice day.